Hello, bachon. Let's read the question. The question says, read the following statements and choose the correct statement. First statement दिया हुआ है, scapula is ventral, flat, triangular bone which is present between the first and seventh rib. Second, a cup-shaped bone called the patella covers the knee dorsally. Third, clavicle is a short, flat bone without any curvature. And fourth, the number of bones in forelimb below the elbow joint and the number of bones in the hind limb below the knee joint are not equal. So the key concept for this question is appendicular skeleton. Appendicular skeleton is basically the framework of it is the framework of bones and cartilages that forms the appendages. So appendages के skeleton को along with the pelvic and pectoral girdles, it is together called skeleton. सबसे पहले appendicular skeleton में आता है limbs. Limbs, as we know, is divided into forelimbs and hind limbs. Both forelimbs and hind limbs contain 30 bones each. Basically, limbs में जो है 30 bones present होते हैं. The forelimb consists of humerus, radius, ulna. There is carpals, which are the wrist bones, जो 8 होते हैं. There are metacarpals, which are palm bones, जो 5 होते हैं. And there are phalanges, which are 14 in number, which make the fingers. Moreover, जो hind limbs होते हैं, hind limbs में आता है femur, there is tibia, there is fibula, then there is tarsals. Tarsals are also, these are the ankle bones which are present 7 in number. There are metatarsals. Metatarsals are 5 in number. And there are phalanges, जो again fingers बनाते हैं, which are 14 in number. And the bones of the legs, which is the hind limb. Limbs में एक और bone include होता है, which is called the patella, which is basically the kneecap, which covers the knee ventrally. Girdles is also divided into pectoral girdle and pelvic girdle. Girdles are basically the structures which help in the articulation of the upper limbs and the lower limbs with the axial skeleton. Each of the girdle is formed of two halves. मतलब हर एक girdle के two halves present होते हैं. Pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. Scapula is a large triangular flat bone which is present basically in the dorsal part. Dorsally present होता है. And it is present between the second and the seventh ribs. Second और seventh ribs के बीच में ये present होता है, the scapula. On the other hand, जो clavicle होता है, it is also known as the collarbone. It basically articulates with the acromion process of the scapula. Clavicle जो होता है, हर एक clavicle are long cylindrical bones. They are not flat and they also contain
2 curvatures. हर एक क्लैविकल में 2 कर्वेचर होता है. Pelvic girdle, on the other hand, consists of 2 coxal bones, और हर एक coxal bone जो होता है, it is made up of ilium, ischium and pubis. इनके पॉइंट ऑफ फ्यूजन में जो कैविटी बनती है उस कैविटी को बोलते हैं एसिटाब्यूलम, और इसी एसिटाब्यूलम कैविटी में आर्टिकुलेट करता है फीमर और द थाई बोन. पेल्विक गर्डल के जो 2 हाफ होते हैं, दे मीट वेंट्रली and they are attached by a fibrous cartilage which is called the pubic symphysis. तो वो क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है स्कैपुला इज वेंट्रल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेवेंथ रिब. तो ये सही होता अगर यहाँ पे डॉर्सल लिखा होता, तो स्कैपुला जो होता है पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, इट इज डॉर्सल, सो दिस इज रॉन्ग. सेकंड, अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड द पटेला कवर्स द नी डॉर्सली, नो दिस इज आल्सो रॉन्ग. जो पटेला होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है. थर्ड, क्लैविकल इज अ शॉर्ट फ्लैट बोन, ये दोनों ही गलत है. क्लैविकल लॉन्ग होता है और सिलिंड्रिकल होता है विदाउट एनी कर्वेचर, नहीं इसमें 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. And last, the number of bones in the forelimb below the elbow joint and the number of bones in the hind limb below the knee joint are not equal. This is right because इस स्लाइड में हमने देखा था जो कार्पल्स होते हैं वो 8 होते हैं. बिलो द एल्बो जॉइंट आता है रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, और बिलो द नी जॉइंट आता है टार्सल्स, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, टिबिया एंड फिबुला. बट यहाँ पे द नंबर ऑफ टार्सल्स एंड द नंबर ऑफ कार्पल्स आर अनइक्वल इवन दो रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर सेम. सो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं. सो दिस इज राइट. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. So the final answer for this question is option D. Hope you understood well. Best of luck.